The research of COVID-19 cases in the country has posed a number of challenges in front of the entire country, with the authorities leaving no stone unturned in its efforts to curb the virus spread. Citizens' organizations and religious institutions are also doing their best to provide their services to the needy. Recently, a mosque in the capital city of New Delhi has been converted into a temporary COVID-19 facility. In desperate times like these of the pandemic, it becomes very important for all citizens to join hands together and take measures to help those who are needy and destitute. While a number of individuals and organizations have stepped up to distribute free meals, NGOs and religious organizations are taking out sanitization drives and arranging oxygen cylinders for the needy. Citing an example of religious harmony and contributing to the cause, a mosque in New Delhi city has been converted into a COVID-19 quarantine center where citizens, regardless of their caste, religion and socio-economic backgrounds, can be quarantined. ये हमने कोविड आइसोलेट सेंटर खोला है और इसमें से मेडिसिन्स का हमने अरेंजमेंट रखा है आइसोलेट करने के लिए। और इसके अलावा अभी तक जो इंक्वायरीज़ आई हैं हमारे पास वो ऑक्सीजन वाली आई हैं और वो हमारा सेंटर नहीं है। तो फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई आता है तो उनके लिए भी वो अरेंजमेंट किया जाए। Located in the Green Park area of the capital city, this mosque is therefore called as the Green Park Mosque by locals. Currently, this quarantine center is equipped with 10 beds and all medical facilities. Patients will be provided with masks, sanitizers and medicines along with free meals 3 times a day. हमारे पास व्यवस्था मेडिसिन्स हैं, ग्लव्स हैं, पीपी किट्स हैं और सारी सैनिटाइज़र सिस्टम है, वो हमने सारा अरेंजमेंट रखा हुआ अपने पास। तो अभी फ़िलहाल इंक्वायरीज़ चल रही हैं, हमारे पास मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं और हम उनको बताते हैं कि हमारे पास बेड अवेलेबल है, मेडिसिन्स अवेलेबल है और आपका जो डिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स का, हम उस पर आपको चीज़ें दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। खाना, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर वो हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। Similarly, temples, gurudwaras and other religious places are also making arrangements and taking steps to help the needy amid the pandemic and serve a greater cause.